Good evening, ladies and gentlemen. We absolutely believe in the power of innovative entrepreneurship on every level. That's why we are exploring ways to improve our education wing by making it as effective as possible. I, Priyanka, on behalf of Federation of Indian Industry and Professionals, welcome you all to the leading Industry Insights wing to educate and make aware mankind in the country and globe. Here are some house rules for you. Keep your phone in silent mode. Rename yourself with mobile number. Put your queries in the chat box. Keep your notepad and pen ready. Note down all the relevant points for discussion. Also, for your information, a recorded version of webinar will be available on YouTube and Facebook. Thank you. Now, it is time to learn the fundamentals of the Federation of Indian Industry and Professionals. Unite together, succeed together. The Federation of Indian Industry and Professionals is a unique, multi-stakeholder organization of visionary industrialists, businessmen, and professionals who share a commitment in shaping the future of industry and society at large. The Federation of Indian Industry and Professionals is a not-for-profit organization. FIIP was established on the 1st of October 2020 with the objective of boosting a small and medium business movement across the country and becoming the voice of India's various business sectors. It serves its members and the whole society through the private and public corporate sectors within the country. FIIP is a lifeline for new startups, small and medium business leaders. It is a crucial platform for networking and collaboration for each stakeholder who is working for the nation-building cause and to build Atmanirbhar Bharat. FIIP is actively engaged in the welfare of business community and general society. It encourages debate and organizes engagement programs with policymakers, Indian private and public corporate sectors, multinational companies, regional chambers of commerce, industrial associations and professional associations in each state of the country. FIIP has created a cluster network of 40,000 plus GST practitioners and made available a platform for networking and consensus building within and across sectors, and is the best platform for Indian industry, policymakers and the international business community. Vision: to facilitate and boost entrepreneurship and entrepreneurial development in the country, to support socio-eco development leaders throughout the nation, to encourage women power in various fields, to make Atmanirbhar Nari. Mission: creating a world-class talent body of 5 lakh influential and powerful industrialists, entrepreneurs, businessmen, women, and professionals through FIIP platform within 10 years. DNA: sustainable growth, empowerment and creation. Purpose: helping business people, supporting economic development. Creating industrial insights, inculcating industrial development. Facilitating forums for professionals, solving problems with the right solutions, enhancing skills among business owners, and creating a common platform for building interpersonal relationships. Support for micro, small, and medium enterprises businesses, formulating applied strategies to meet challenges of various industries. Making society aware of social, health and environmental issues. FIIP has various business platforms such as Network, Industrial Insights, Karta, Spot, Digital, Womenpreneur and Navorja. These platforms facilitate to make our country Atmanirbhar Bharat in the field of socio-eco environment, education, social and life. Now, it's time to present you Industrial Insights topic for the day. We all know that business is an organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial or professional activities. And of course, business is to earn profit. Business comprises very many functions like marketing, sales, service, finance, purchase, R&D, engineering, logistics, human resource, personnel, facility, quality and many others. Further, these functions will have various systems and processes. We need adequate knowledge and various skills to practice and execute these systems and processes, and handle these functions to run the business or an enterprise and achieve desired results. This is where industry insights play an important role in providing inputs on various topics for all kind of business categories and professionals. Industry Insights will have series of programs organized every fortnight.
And it will cover topics in different categories like financial management and accounting, marketing, sales and service, managerial skills and people management, project management and planning, quality systems and quality management, business establishing process, government policies, support system, and legal aspects of business, and many more. These main categories will have very many subtopics to comprise all information and contents. For example, financial management and accounting will have financial planning, management accounting, auditing, taxation, etc. etc. Marketing, sales and service category will have brand management, digital marketing, handling objections, customer retention, etc. Under managerial skills and people management, we will have leadership skills, team building and motivation, delegating skills, analytical skill, and many more topics. Project management and planning category will have project planning and budgeting, resource management, risk management, strategic alignment, etc. etc. Under quality systems and management, there will be topics like 4 main elements of quality, 7 principles of QMS, total quality management, ISO, etc. etc. Government policy support system and legal aspects of business will cover topics like government schemes and policies, role of banking in economy, role and support of MSME, etc. The laws to maintain the decorum as per state and central government. With this brief about the industry insights, now I request our programs coordinator to take over for introducing today's topic and the speaker. Thank you. Thank you, Priyanka. Very good evening, one and all friends. We are here with our Industry Insight program number 9. And today, we're very fortunate to have Mr. Raj Kumar with us, with the GST expert, and he's going to enlighten us on Goods and Service Tax Act, public receipts of goods versus ITC, section /2 and B friend. Now, about him, it's a privilege us to introduce, and honestly speaking, he's the man of that kind of knowledge, the practicality. He is a BCom, FCA, then he has become the membership of ICAC in 1989, fellow of 1994. Then he qualified information system auditor in 2004, friends. Impaneled as per the reviewer with the ICAI and ex-member of Regional Advisory Committee of the Lucknow Commissionerate of Central Fund. So the person from the Lucknow, the place where, the area of sweet and appropriate quality knowledgeable people are there. And I'm proud that Raj, you are here today. And he is ex-member of Taxpayer Committee of Lucknow Commissionerate of Central Excise. And friend, he established his firm, Messrs. Raj and Associate in 1989. So we are sure, friend, today, Mr. Raj is going to talk about the practicability, the challenges of the things altogether, and the solution and the practical solution, and how to overcome from the bureaucratic approach and altogether to be more practical, because he is an adequate also. So he knows how to put the consent statements to go in a proper legal perspective, and is a taxation. Yes, friend, it's a need of every business people, every company, which are facing today a lot of problems. I'm sure today, Mr. Raj Kumar will definitely enlighten us in that lineup. Sir, we're very happy to have here. We welcome you here, sir, and we are definitely going to gain a lot of applicable knowledge from you, sir, where everyone will get an educated, proper way that how to deal in basically in the GST. As you know that everything is happening every day, new circular, number of basically the ifs and buts. So I'm sure, sir, the way you're going to enlighten that from the legal perspective, as being your advocate, definitely today, all concerned participants will have a different enlightenment, and their questions definitely will be entertained by us after the program, means completion of the program. And with this, sir, we welcome on behalf of FIIP, sir, and Dice is you are now, sir. Over to you, sir. Thank you, Mr. Atul, and a very, very happy good evening to all of my friends from business industry. So I'm sir here, Dr. Mohite. Atul is there. Dr. Mohite. Sorry. No problem. Thank you. Thank you, Mr. Mohite, because this is my first meeting with all of you. Correct. So I also welcome all of you for joining with me.
that exactly you have introduced my biodata in very detailed. Although I have done my practice since 1989 in indirect tax only. So this is the GST is the compilation of the Central Excise Act, VAT Act, and Service Tax Act. So VAT is only for the sale and purchase, excise is for manufacturing, service is for service. So this act is comprising manufacturing as well as sale. So compilation of that is the Supply Act. Now the issue before the GST in last 5 years, before us and before the department, because all are infant in this GST, all are born in GST, so they are getting educated by, as you just told, various notification. There are notification, clarification, press release, and tweeters, and lastly, the final authority is the portal, GST portal. What GST portal can allow you? This is the final act. I just told the act, prime is the act, then rules, then regulation, then circular, then notification. But in the GST, the prime is the GST portal. अगर GST portal पर आप कुछ कर सकते हैं, then वही act है. क्योंकि बहुत सी ऐसे इश्यूज हैं जो GST पोर्टल पर अलाउड नहीं करते, लेकिन आप एक्ट में लिखा हुआ कि ये हो सकता है, बट GST पोर्टल जब वो ट्विटर और ये और मैडम सीतारमन को लिखा जाता है तब वो कहते हैं उससे इन्फोसिस से कि भैया इसको भी एक्टिवेट करो. जब तक वो एक्टिवेट होता है, अभी आपने रिसेंटली देखा है ट्रान, दैट फर्स्ट ट्रान 1 एक वो फैसिलिटी थी कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग ITCs हैं in the VAT Act, Central Excise Act, services, that can be carried forward in the GST regime as a ITC. But 2 months or 3 months lapsed, that Tran 1 is not activated at the GSTN portal. Then people taking the ITC in their 3V GST or 3V registers only without any authority. Then Tran 1 open at the portal, and within 2 or 3 months, it was last date was deadline was there 27th of December, और वो लोग भर नहीं पाए उसको. उसके बाद वो चलता रहा litigation. Now the Supreme Court has told कि भाई आप दोबारा Tran 1 को दीजिए, और उन्होंने they have opened on 1st of October till 30th November. Now we have filed that Tran 1, but credit is not reflecting in our accounts. Why? They have issued the advisory, they have issued the circular without verification of the, so that the intention of legislature to cut down the manual intervention. But these things are to incorporate this manual intervention. Mr. Anurag Thakur told before the Honorable Parliament that this is a faceless, but faceless नहीं हो पा रहा ना ये. जब तक डिपार्टमेंटल इंटरवेंशन खत्म नहीं होगा, हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं, वो हमारा असेसमेंट मानना चाहिए. बट दे आर आस्किंग फॉर के भाई ये पेपर लाइए, वो पेपर लाइए, ये पेपर दिखाइए, ये पेपर दिखाइए. तो जो आज का टॉपिक है वो मैंने सजेस्ट किया था, और वो मुझे बड़ा, मैं उसे फेस कर रहा हूं कि जो मेन मोटिव है इसका, दिस इज ITC. जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, केवल आप उसी पर GST दें. Whatever the ITC in GST paid on your input is to be credited in your account, and whatever the value addition you have done, you have to pay in cash only that. But department is viewing that this is a profit to the industry. Very right, it is a profit to the industry. But they are obstructing नई तरह की टेक्निक्स लगा दी. अब ITC लेने के लिए as per section 16
there are four things. Excuse me. Yeah, please have it. Only 4 clauses are there. So I'm starting my presentation with the PowerPoint. Sir, it is available? Sir, it is now available on the screen. डॉक्टर मोहते स्क्रीन शेयर हो रहा है? हो रहा है? ओके तो आईटीसी लेने के लिए there are four sub clauses of section 16. One is, I am coming on that, every registered person subject to condition and restriction as may be prescribed manner specified in section 49 be entitled to take credit of input tax charge on any inward supplies, services or both to him which are used or intended to be used in course of furtherance of business. So first thing is to कि आपका बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है वो आइटम, तो आप उस पर आईटीसी लिखते हैं, वेदर इट इज ए कैपिटल गुड्स, वेदर इज ए इनपुट, वेदर इट इज ए सर्विस. नाउ हाउ टू क्लेम? फर्स्ट थिंग इज ही इज इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस. उसके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जहां उसने इनवॉइस पर जो चीज परचेज की है, वट एवर ही हैज परचेज, इनपुट कैपिटल गुड्स और सर्विस, he must have in possession of the invoice. Second, the details of that invoice has been furnished by the supplier on his GSTR1. GSTR1 means outward supply, and it is reflected in my GSTR2B. Third one is he has received the goods or service or both. So today topic is on for 16(2)B. He has whether he has received the goods or service or both. How do we prove that goods and service has received? And next one, the detail of input tax credit in respect of said supply communicated to sir registered under 38 has not been restricted by the department. अगर डिपार्टमेंट ने उसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, या कोई उसने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया है, देयर आर सर्टेन इश्यूज एंड ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न. So now everything we have complied, but department has objected whether he has received the goods. Department has objected, okay, you have paid the money, you have received the invoice, but how can you prove? The burden is on department, but the department shifted the burden to me on business entities. You prove whether you have received the goods. How from which way you have received the goods. Then we show the tax invoice. So the main issue is
receipt of goods mean goods. Service they don't ask कि सर्विस मिली या नहीं मिली. सर्विस तो मैंने आपको बोल दिया कि साहब HSN पर इतना रेट है इस पर, and for that I charge 1 lakh rupees. They cannot object. But goods, the issue is of the goods, whether goods received or not, the condition of 16(2)(b) is complied or not. They have transferred the ball in our courts, in the businessman courts, that you prove whether you have received or not. हम तो ये कहते हैं जी आपने तो केवल टैक्स इनवॉइस ले ली और उसको पेमेंट कर दिया और अंडर द टेबल उससे पैसा वापस ले लिया और माल आपके आया ही नहीं. और once goods not received, then your outward supply is also rejected because you have not received the goods. So how can you sell it? So the whole business industry, उसकी industry fail कर दी उन्होंने कि ना तो आपने goods लिया, and he imposed the penalty 200%, 100% penalty on the basis of you have purchased purchased the invoice without receiving the goods, and you sold the goods without you sold the invoice without selling the goods, और 100% penalty उधर लगा दी, 100% उसका business कर दिया उन्होंने चौपट. और the only finding is the SSE, the registered person, is unable to justify how he has received the goods. This is the dilemma in the trading industry. Now they are also asking for the manufacturer. Issue very important in the case of manufacturer. Manufacturer के पास 4 चीज होती है. इनवॉइस होती है, के बाद उसका स्टॉक रजिस्टर होता है, उसका गेट रजिस्टर होता है, उसका GRN होता है. अब GRN होता है गुड्स रिसीव नोट. जब उसकी फैक्ट्री में इनसाइड आता है तो आइदर गेट रजिस्टर होता है या वो उसको दिखाता है, सर देखिए मेरे गेट पे एंट्री, दिस इज योर रिकॉर्ड, दिस इज, आप तो बना लेंगे. जब आप परचेज इनवॉइस आपने खरीदी है तो आप गेट रजिस्टर भी बना लेंगे. फिर हम कहते हैं जी सर ये हमारा पेमेंट किया हमने, बोले तो ये भी आपके इनसाइड का फैक्ट्री लगा हुआ है. मुझे तो ये बताइए आपका रोड पर कैसे चला, प्लेस ऑफ बिजनेस से, प्लेस ऑफ सप्लायर से और प्लेस ऑफ बिजनेस तक कैसे आए. अब उसके लिए हम उनको कहते हैं जी आपके एक्ट में सेक्शन 68 में लिखा है कि एज स्पेसिफाइड इन रूल्स, एंड रूल 138 सेज दैट for transportation of goods, for movement of goods, the only requirement is the generation of e-waybill, which contains the GR number, which contains the bill number. But they said, this is your portal. जो आपका सप्लायर है उसने जैसे बिल आपको बना के दिया वैसे ही आपने e-waybill बना दी. सर हाउ फनी. अब बताइए मैं उनको कैसे बताऊं. मैंने ट्रक के फोटो खींच के उनको दिए, बोले सर ये तो ट्रक के फोटो तो आप खींच ही लेंगे. तो इस समय जो सबसे बड़ा इश्यू हो रहा है कि 138 में जो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मूवमेंट है एज पर द लॉ, उसको डिनाई कर रहे हैं. अब देखिए डिलेमा क्या है. जब मोबाइल वाले उसको चेक करते हैं, जब मोबाइल में हमारा गुड्स मूवमेंट में होता है तो मोबाइल यूनिट ऑफ GST ऑफिसर्स चेक करते हैं. वो कहते हैं जी आपके पास 2 चीज होनी चाहिए, आपके पास ई-वे-बिल होना चाहिए, इनवॉइस होनी चाहिए. ई-वे-बिल इनवॉइस होता है वो चला जाता है, लेकिन जब जो ग्राउंड पर जो अथॉरिटीज होती हैं दे ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनके यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर वो मेरा व्हीकल चेक हो गया तो उस पर कोई स्टाम्प लग जाए. ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है. पहले वैट एक्ट में होता था कि वो स्टाम्प लगती थी, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है. 130 इनके पास RFID मीटर है. RFID मीटर्स के से ये रूट मालूम कर लेते हैं कि ये व्हीकल कहाँ जा रहा है, लेकिन वो सारी चीजें जो होती है वो मोबाइल स्क्वाड्स पर होती हैं.
तो अब यहाँ पर हम 3 चीज की अथॉरिटी लेते हैं। हम कहते हैं जी हमारा रूल जो हमारे स्पेसिफिक एक्ट एंड रूल्स हैं वो कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ इज ई वे बिल। हम आपको ई वे बिल दे रहे हैं, टैक्स इनवॉइस दे रहे हैं, पेमेंट का रिकॉर्ड दे रहे हैं कि बैंकिंग चैनल से किया है, विद इन 180 डेज किया है, तो आप हमें आईटीसी अलाउ करिए। उनका कहना होता है कि सर आपका जो मूवमेंट है ना वो 138 के अलावा कोई मूवमेंट बताइए। नाउ द इश्यू स्टार्ट, द लिटिगेशन स्टार्ट ऑन दैट पार्ट। एज पर एक्ट केवल ये 2 चीज है, 50,000 रुपए से ज्यादा का गुड्स है तो आपको मूवमेंट के लिए ई वे बिल जनरेट करना है। पार्ट ए जनरेट मैं करता हूं, पार्ट बी मेरा ट्रांसपोर्टर करता है। अगर मेरा फुल ट्रक लोड है तो पार्ट बी भी मैं जनरेट कर सकता हूं। अब जो उनके इश्यूज है टू ऑब्जेक्ट द मूवमेंट वो ये हैं इश्यूज, फेक इनवॉइसिंग। उनका कहना है जी सर वो जहां से आपने माल खरीदा है हमको इंफॉर्मेशन मिली है कि सर वो आदमी भाग गया और उसकी जो बिजनेस प्रेमाइसेस थे देयर वर नो बिजनेस एक्टिविटीज फाउंड एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेकंड वन इज उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया उसने काम किया 3 महीने उसके बाद कैंसिल कर दिया। उसके बाद डिफॉल्ट है, वो डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर कि उसने आईटीसी गलत ली थी या जो भी कुछ लिया था वो डिफॉल्टर है। दूसरा आपका जो व्हीकल है जिससे आप लाए हैं गुड्स वो किसी टोल से नहीं आए। और तीसरा ये कि जो आपका ट्रांसपोर्टर है वो अनरजिस्टर्ड है, हाउ कैन वी स्यू, उसको हम स्यू कैसे कर सकते हैं क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। ट्रांसपोर्टर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। सर मैंने उसकी जो रेजोल्यूशन निकाले हैं वो मैंने उनके सामने मैं रखता हूं। फर्स्ट, देयर इज नो लीगल प्रोविजन, देयर इज नो लीगल प्रोविजन फॉर मूवमेंट ऑफ for rejecting movement goods when a proper e-tax invoice or proper e-way bill is there, because it is available instantly. When I generate, it is available on the portal, inside portal or outside portal, e-way bill portal. Or now if my client is more turnover is more than 10 crore, then e-tax invoice, tax invoice is also available in the e-tax portal, and e-invoice e-way bill also available. Second one is payment of value of supply and through banking channel. If I have not paid the money, you disallow me, I have paid, and you prove, the burden is on the department, you prove that I have taken back this money. Otherwise you interrogate my supplier. To cross examine, I would like to cross examine that supplier के भैया जो मैंने तुमको पैसा दिया था और तुमने माल दिया था और तुम अब फेक बता रहे हैं ये लोग तुमको, तो मेरा पैसा वापस करो। They are asking for 18%, 12% or 5%. But what about my value of goods? हाँ ये तो ITC कर रहा है, आप तो value of goods भी मेरी गायब कर रहे हो। Then ITC duly reflected in 2B. जब मेरे 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है, मेरे पास और ऐसा क्या सॉल्यूशन है कि इफ आई एम बाइंग द गुड्स फ्रॉम चेन्नई एंड माय बिजनेस प्रेमाइस इज इन सूरत, तो मैं उसको देखने जाऊंगा कि भैया ये माल आ रहा है, डिजिटाइजेशन, मैं तो नेट पे देखता हूँ कौन कौन अच्छे सप्लायर हैं, उन सप्लायर को मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, 50% एडवांस दे देता हूँ, 50% बाद में दे देता हूँ जब माल आ जाता है। उसके बाद उसने वो माल कहां से भेजा, किसके यहाँ से भेजा, कि मैं क्या वहां जाऊंगा बताइए आप चेन्नई? नॉट पॉसिबल। और ये भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने इसका ऑब्जर्वेशन दिया है, मैं कम बाद में आऊंगा उस पर। दूसरा, मैंने इनपुट परचेज किया, इनपुट परचेज करके मैंने उसको आयरन स्क्रैप खरीदी, उससे मैंने टीएमटी बार बना दी, तो अगर मेरे यहाँ आयरन स्क्रैप नहीं आई तो मैंने टीएमटी बार कहां से बना दी?
एंड फ्रॉम वेयर आई गॉट द रॉ मटेरियल। आपका कहना ये है कि साहब ये आपने तो कागज खरीदा कि साहब आपके यहाँ गुड्स मूवमेंट नहीं हुआ, तो मेरे यहाँ जो 25 करोड़ रुपए का प्लांट लगा हुआ है टीएमटी मैन्युफैक्चरिंग करने का, इस पर मैं करीब 50 लाख रुपए महीने की वो देता हूँ बिजली, जिससे मैं टीएमटी कन्वर्ट करता हूँ। तो इनपुट कहां से आया? डिपार्टमेंट हैज टू प्रूव कि फ्रॉम वेयर आई गॉट दिस रॉ मटेरियल। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में देयर इज वास्ट डिफरेंस। मैं कन्वर्जन कर रहा हूं, मेरा इनपुट ए है और मैं सेल कर रहा हूं बी। देन सिलेक्शन ऑफ रूट। अब देयर आर सेवरल रूट्स। हम ट्रांसपोर्टर को देते हैं बाय वेट, नॉट बाय रूट, कि इस इतनी किलोमीटर में आपका क्या चार्जेस होगा। वो बोलता है जी 10 रुपीज पर केजी लूंगा, ठीक है, बट दैट इंक्लूसिव ऑफ ऑल, उसको मुझे पहुंच देनी है कि वो मेरी फैक्ट्री में उतारता है, आइदर 2 पे हो भाड़ा या फ्रेट, मेरा क्लाइंट दे रहा है FORO, लेकिन वो मेरी फैक्ट्री में उतारता है। अब ये उसका प्रेरोगेटिव है कि वो किस रूट से ले जाता है, कि ट्राई कि आपको शॉर्टेस्ट रूट से लाए जिसका उसको फ्यूल की बचत हो। वो ट्राई करता है कि मैं बिना टोल वाले रूट से लेके आऊं जिससे मुझे टोल की प्राइस बच जाए। एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि मुझे टोल से गुजरना जरूरी है। हमने उनके सामने बहुत सारे वो रखे गूगल मैप्स, जिसमें देयर आर डिफरेंट रूट्स ऑफ द सेम प्लेसेस। कंसाइनियन कंसाइनर प्लेस में देयर आर सो मेनी रूट्स गूगल मैप्स, जिनमें रूट्स जिसमें टोल पड़ता ही नहीं है, दे आर शॉर्ट रूट्स। ट्रांसपोर्टर ऑलवेज, ड्राइवर ऑलवेज like to save the toll charges. Then the very precious and very important part of this, to disprove my movement, you interrogate the transporter. They are not interrogating the transporter. They are simply saying कि टोल से नहीं गुजरा इसलिए आप ITC डिसअलाउ कर रहा हूं। तो these provision to put before them, हम उनके सामने रखते हैं कि आप बताइए क्या मैंने पैसे वापस लिए जो उसको दिए मैंने, क्या मैंने इनपुट कहीं और से खरीदा, आप बताइए कि आपने उससे तो कागज लिए, इनपुट कहीं और से खरीदा। क्या आपने ट्रांसपोर्टर को इंटरोगेट किया? They are silent on that part, and we are fighting. Now the very difficult thing is that first appellate authority is available in the GST and second appellate authority is missing because tribunal has not been constituted by the government of India, and every client, a small client, cannot go before the Honorable High Courts, and High Court is doing nothing. On rejection of my first appeal, High Court is just saying please deposit 20% more, and the file kept in abeyance. They are not deciding on merits. Or if we will not file the appeal before rate within 3 months, the department also is issued recovery, क्योंकि limitation is only 3 months. वो कहते हैं या तो आप हाई कोर्ट से स्टे लीजिए। अब आप समझिए जो छोटा व्यापारी है वो हाई कोर्ट पे जाएगा, 1 लाख रुपया का खर्चा करेगा और जिसकी टोटल 5 लाख रुपए की डिमांड है। नॉट फिजिबल। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये जो हमने अभी डिस्कस किए इश्यूज हम उनके सामने रखें और हम डिपार्टमेंट को कहेंगे द बर्डन इज ऑन यू, आप डिस्प्रूव करिए कि मूवमेंट नहीं हुआ। हम इतनी चीजें रख रहे हैं कि लीगल प्रोविजन नहीं है, आप एक्ट से बियॉन्ड जा रहे हैं। हम कह रहे हैं जी हमने पेमेंट किया, आप बताइए कि हमने पेमेंट कैसे वापस ले लिया उससे। हम कह रहे हैं जी हमारे 2B जो आपका जो सिस्टम है तो 2B में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ITC आपको तब मिलेगी मेरे 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर
आप जिस मेरे सप्लायर को ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको यही नहीं मालूम कि उस इंफॉर्मेशन, उस इन्वेस्टिगेशन का आउटकम क्या हुआ, क्या उसने पैसा जमा कर दिया, हो सकता है उसने पैसा जमा कर दिया हो। और सबसे रिलेवेंट क्या है इसमें, जो अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिपीटेडली 2 जजमेंट में कहा, उन्होंने कहा क्या रिलेवेंट पीरियड में वो आदमी था वहां या नहीं, ऐसे आपके पास कोई एविडेंस है डिपार्टमेंट के पास? क्योंकि कैंसिलेशन जो होता है वो उस दिन करते हैं, ये जिस दिन ये देखते हैं कि उस दिन उनकी टीम विजिट की और वहां पर कोई नहीं मिला, या बिजनेस नहीं मिला, या स्टाफ नहीं मिला। अब कोई आदमी अगर 10 दिन के लिए बाहर जा रहा है तो वो अपना ताला लगा के ही तो जाएगा सर। और ये उस दिन पहुंच गए, और पहुंच के इन्होंने कहा साहब ताला बराबर होता, ये तो ताला खुलता ही नहीं है। उन्हें ताला नहीं खुलता, हो गया भाई फेक, बोगस। और उन्होंने अपना फ्लेयर कर दिया अपने पोर्टल, जीएसटी इनसाइट पोर्टल पे। अब पूरे हिंदुस्तान में जितने लोगों ने उससे माल खरीदा उसकी आईटीसी ब्लॉक। और आईटीसी ब्लॉक करने का टाइम होता है 1 साल, 1 साल के लिए ब्लॉक हो गई। और जब 1 साल में 1 दिन बचा तो उसे शो कोज नोटिस दे दिया, your supplier is non in existence, is bogus, so you have not procured the goods, only the invoice purchase, and your ITC is disallowed. 100% penalty and 5-year interest. 5 year, क्योंकि 17, 18, 18, 19 तक चल रहा है। तो हमको तो आपने बिल्कुल ना कानून से चलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हुआ है, क्योंकि हमें फिर लास्ट में इस जजमेंट को लेना पड़ता है, जिस जजमेंट को रिलाई करने के बाद फिर उनको डराना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि भैया ये दिस इज हाई कोर्ट जजमेंट, इफ यू डोंट फॉलो इट, इट इज ए जुडिशियल इंडिसिप्लिन एंड यू विल लाइबल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। इस जजमेंट को कोलकाता हाई कोर्ट ने बोला, फिर उसके बाद फॉलो किया दूसरी हाई कोर्ट ने। उसमें उन्होंने 3 पॉइंट दिए, whether payment on purchase in question along with GST were actually paid, and it is affirmative, in answer is affirmative in all cases. Whether the transaction and purchase were made before or after cancellation, this is very important. भाई आपका जिस समय कैंसिल हुआ रजिस्ट्रेशन, आपने उसके बाद माल खरीदा या उससे पहले खरीदा? And third one is statutory compliance was there or not. तो ये कंडीशंस को हटाकर वो ये कहते हैं जी मूवमेंट नहीं हुआ, और मूवमेंट को प्रूव नहीं कर पाता डिपार्टमेंट। हम प्रूव कर रहे हैं क्योंकि हम कन्वर्जन कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम इनपुट को इनपुट नहीं बेच रहे, हम इनपुट को फाइनल प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। और हमारे पास एक उसके मैन्युफैक्चरर के पास और कोई तरीका नहीं है कि वो कैसे जाने कि साहब वो सप्लायर जो है जिससे मैं आज माल खरीद रहा हूं वो कल डिफॉल्टर हो जाएगा। उसके लिए कोर्ट ने बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन दिया। Honorable court has observed that it is beyond the competence of the appellant, beyond the competence of registered person to verify the history and the genuine nature of the supplier. How he can? Even though appellant had complied with minimum threshold of cross-checking with the presence of such, वो पोर्टल से ही चेक कर सकता है whether he is active on the portal. He is active. He is filing his returns, filing. GSTR1 is filing, GSTR3 is filing. Therefore, impugned order is liable to be struck down on the ground that not only does it presume the appellant to do something which is impossible. आज मैं माल खरीद रहा हूं, कल वो डिफॉल्टर हो जाता है, तो मुझे क्या मालूम सर कल डिफॉल्टर, कल तो मैं भी हो सकता हूँ डिफॉल्टर। आगे का फोर्सीन किसे मालूम है भैया आगे क्या होने वाला है? तो जो चीज आज है, जो मैं आज परचेस कर रहा हूँ गुड्स, मैं आज उसको देख सकता हूँ। आई कैन वॉच ओनली ऑन द GSTN पोर्टल स्टेटस ऑफ द रेजिस्ट्रेंट। मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ, वो एक्टिव होता है, रिटर्न फाइल कर रहा है, उसकी कमोडिटी चेक कर सकता हूँ कि वो किस कमोडिटी में डील कर रहा है।
इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं. But department is going against that law. Department is taking only a single plea. The supplier is fake and you have not able to prove the movement of the goods. Although legally I have proved. So this is a very good important judgment, and this is a very important issue which are being very, maybe in UP, in Haryana, in Rajasthan, in Madhya Pradesh, it is very much problemsome. And the High Court is dealing these issues and remanding that matter before the authorities. And authorities are, क्योंकि because it is not time bound demands, तो वो अपना उसको डाले हुए हैं. और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मैं मूवमेंट को रूल्स एक्ट के अलावा कैसे प्रूव करूं. और आईटीसी मेरी सारी कंडीशन पूरी होने के बावजूद भी रिजेक्ट हो रही है बिकॉज द डिफॉल्ट ऑफ माय सप्लायर. ऑल्दो आई रिसीव द गुड्स, रिलेवेंट पॉइंट टाइम पर डिफॉल्टर नहीं था मेरा सप्लायर, उसके बाद डिफॉल्टर हो गया तो डिपार्टमेंट ने उसको डिफॉल्टर कर दिया और मेरी जो प्रीवियस इश्यूज थे वो उन्होंने डिसअलाउ कर दिया. और आईटीसी इज द बैकबोन ऑफ दिस जीएसटी एक्ट. और गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो, और बिकॉज ऑफ दिस आईटीसी, इसीलिए उन्होंने अक्रॉस आईटीसी दी. Although some bad men also in the society, but not 100%. They are saying that everyone is bad. एक अगर चावल अच्छा निकल आया तो उन्होंने पूरा सब चावल खराब बता दिया. तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है और इसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही. और ये फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी हमारी ट्रिब्यूनल जब तक नहीं कॉन्स्टिट्यूट होगी तब तक ये इश्यू डिसाइड नहीं होंगे. और अगर हम इसका पुराना सीन देखें तो पहले भी सैनवेट क्रेडिट, सेंट्रल एक्साइज में सैनवेट क्रेडिट हुआ करता था, उसमें भी ये इश्यू आते थे और ये सारे सेटल हुए इन आवर फेवर, इन द फेवर ऑफ द एसएससी. देखिए ये एक जजमेंट था, इसमें था स्टेटरी रिकॉर्ड ऑफ द रिसिपेंट showing receipt, use of input in manufacture, and said record admissible as evidence unless proved otherwise. क्योंकि the burden is on the department. Revenue failed to disprove these records, then will credit admissible to. आप मेरे रिकॉर्ड देखिए ना, मेरे यहाँ आया, मेरे स्टॉक में चढ़ा, उससे कन्वर्जन हुआ, उस कन्वर्जन के बाद मैंने फाइनल प्रोडक्ट बेचा, उस पर जीएसटी दिया. उस इसी तरह से डिपार्टमेंट के पास कोई एविडेंस नहीं है. नो कॉरेलेटिव एविडेंस टू एड्यूस बाय द डिपार्टमेंट फॉर नॉन रिसीप्ट ऑफ इनपुट इन द फैक्ट्री ऑफ द एसएससी. इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रेरी एविडेंस, सैनवेट क्रेडिट कैन नॉट बी डिनाइड. नो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट स्टेटमेंट. मेरे सप्लायर ने स्टेटमेंट दे दिया, हाँ साहब मैंने तो कुछ नहीं माल बेचा था. द रिसीप्ट ऑफ इनपुट रिफ्लेक्टेड इन स्टेटरी रिकॉर्ड. No allegation that input required for making final product were procured from any other source. In absence of input, not possible to manufacture final product. जब तक मुझे input नहीं होगा, मैं manufacture क्या करूँगा? These judgments are also applicable in the GST. Tripura High Court had so said, very specifically said. ये लोग बोलते हैं कि साहब ये तो GST का judgment लाइए. त्रिपुरा हाई कोर्ट ने बोला कि जीएसटी का जजमेंट जो है वो जीएसटी का इसे बना है. जीएसटी बना है सेंट्रल एक्साइज से, वैट एक्ट से, एंड स्टेट एक्ट एंड द सर्विस टैक्स. तो जो ऑल द जजमेंट्स इन फेवर और इन अगेंस्ट विल बी बाइंडिंग टू जीएसटी अथॉरिटीज अंडर जीएसटी regime as well. बट हिंदुस्तान में जो दिक्कत है वो ये है, जो एडजुडिकेशन ऑफ अथॉरिटी है
वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी कह देता है कि इट इज नॉट रिलेटेड टू यू, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर केस। एंड जो फर्स्ट अपील होती है वो डिपार्टमेंटल अपील होती है, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी होती है। ही ऑल्सो प्रो रेवेन्यू, and the second appellate authority as a tribunal, it's a fact finding authority, वो अभी मिसिंग है, इसलिए लिटिगेशन बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ा इशू जो फ्लेयर हो रहा है इस समय हिंदुस्तान में वो दिस आईटीसी, और उसके दो ही रीजन है उनका। वो कहते हैं जी सप्लायर इज फेक, सप्लायर इज बोगस, सप्लायर इज नॉन एग्जिस्टेंट एंड यू आर अनेबल टू प्रूव द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, then you have not received the goods. Sir, this is my all on that subject. Dr. Mohte. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is all for the subject, the topic of today's. Yeah, I request other fellow members to have the question before our small information. Sir, definitely we will entertain the questions, but we have our small information to the participants, those who are here. We are basically split up with various platforms through BYS, through FIIP. So we are into the in youth development, women development, and sport, basically the area of our membership. So those who have not yet registered with us, they can go, they can scan here, and they can become a member of our spot, basically the spot, where they can have their connectivity with the various people of the business houses and business personalities. Further, we have our concern activity with the networking. You have to grow your business, then you can go scan here and can have a networking altogether for your business as well. So we are working with these all our various platforms. As you know that network and spot, as I explained you, these are business related empowering activity and networking activity. For industry insight, just rightly, as Raj Kumar sir has given his lecture, guidance. So we are upgrading, educating our professionals related with the various laws, commercial point of view, their concern, the business strategy thinking process all together, the marketing area, all perspective of the management. Digitally, yes, we are promoting our business people to introduce their concerned product. And women empower approach we have through the womanpreneur, where we are allowing our womanpreneur to come further. We are developing them, we are guiding them, and we are very happy to tell you we have an independent, basically the platform here, and we are working on that. Youth, yes, very recently we have basically thought to make that all together. Our youth development is also taking place in national level, and we are thinking with a perspective from village to urban area and the city area to develop every youth towards their career as such. Navaurja is another our platform where we are educating every fortnight with our members and also non-members, because this is a NGO. So we are helping our society to upgrade their knowledge with environment, health, career, education in that line. And our katta, anyone can come and talk with there. So this is about our concerned platforms. Now I request all fellow participants, you can ask direct question to Raj Kumar sir, and then yes, Raj Kumar sir, we will be definitely entertaining their questions. So I request every participant, please come ahead, have your questions. So wonderful, yeah, wonderful explanation, Raj Kumar ji. Very practical, very unique, and very to the point. And you are specified by quoting the case laws, also the judgments of the high courts and Supreme Courts here, sir. I'm expecting questions from the participant. Yeah, or to participant. You can unmute and you can ask, or you can chat, put in the chat box. So my friend Atul will assist me for the chat box questioning in that line. Yes, friends, you can unmute and ask question to our fellow speaker here.
because the way Raj Kumar has put the crystal clear thought process, I think so much more answers have been given by. So there will be lesser question, I think so, Raj Kumar ji. Thank you. Yeah. Yeah, Atul, if somebody is putting in the chat box, please cooperate me for that. No, I can't see any question yet in the chat box. True. So it means everyone has understood very well. That is And what we have. there is a question from Shri Kumar Pillai. Yeah, please. You please read and answer that. Yeah. Sir, while cancelling GST registration, if any unutilized ITC, can we show as a reversal under GSTR 3B or just needs to issue B2C and account through GSTR 1? Sir, you can reverse it in your GSTR 3B because it cannot be refunded. ITC cannot be refunded to you. If any ITC is at the time of cancellation is lying in your unutilized, lying in your ITC ledger, you can reverse it in GST 3B to clear that. Or you can use, if you say that if by issuing B2C, no, if you don't have any goods, how can you issue invoice? So it is the legally it is correct method. You reverse in the there are two options in reversal. That is, one is under 42, 43 rule 140, and second is others. So you put it in others and take a remark in the last column that it is ineligible in ITC is not it cannot be utilized since I have closed the business. Okay, you are any further question? Sir, even after giving reply, they are sending DRC for 17-18 GSTR 2A 3B mismatch. Sir, there should be no mismatch. Reversal से mismatch नहीं होगा. Reversal से तो ITC आपकी और कम हो जाएगी. भाई आपका 2B में जो दिख रही होगी वो if say 100 rupees and you take in the credit of 100 rupees, then you reverse 20 rupees, then your net ITC will be 80. So there will be no DRC 07. Okay, Mr. Pillai. I think he's okay now. Yeah, sir. Yeah. Any other question from any viewer? Yeah, hello, sir. This is Ajish here. Sir, this GST, this subject is very complicated to me. Like, I'll just summarize. Like, suppose if I'm manufacturing something, I purchase some goods. So, while selling the goods, so I can show that I have purchased this and get credit. Is it? Could you please tell it in a very easy manner, sir? What's your name, Mr.? My name is Ajish. Ajish ji, are you understand Hindi? No. A little, sir. Little, sir. No. Okay. Your question is, as I observe that you purchase anything, any goods, and you sell the same goods. Yani, this means trading. One more. You are engaged in trading or manufacturing? You could say manufacturing, sir. Manufacturing. So you purchase the input A and you convert it into B and sell the B. Very right? Yeah. Okay. So what is the problem to you? What is your query? Query is like, how do you adjust this, what you paid via buying the goods, and how will you, while you sell it, how you get the credit? Get the credit. So Yeah. you have just started your business? Going to start kind of thing, sir. Okay. You intend to start. When you purchase any input means raw material. Okay. So for example, you purchase the raw material, say scrap, iron scrap,
or any aluminum scrap or brass scrap. Okay, the cost of scrap is 100 rupees and the GST charge on that scrap is 18%. The total cost for you is 118 rupees. Okay, Yes, sir. you take 100 rupees in your purchase account and 18 rupees in your ITC receivable account. Okay, Okay, sir. and you file your GSTR 3B return. While filing the return, you put ITC available 18 rupees. That will credit it to your ITC credit ledger. Okay, this month you only purchase the input and you convert, and your conversion is we are presuming 1 month. Okay, okay, Yes, sir. okay, yes, okay. Yes, sir. Next month your product is produced. What is your final product? Maybe brass statue or maybe brass utensil. It was produced after a month. Okay, then the cost of that production after adding the this overheads, electricity, labor and finishing, etc., your cost will come to rupees 20. Then your cost of production comes to rupees 120. Okay, Yes, sir. and yeah, the rate of tax on your final product is also 18%. Okay, Yes, sir. then the tax will come on your product is 21 rupees 60 paisa. Okay, Yes, sir. you will raise the invoice to your buyer 141 rupees 60 paisa. Okay, 120 is the cost, 21 rupees 60 paisa is the rate of tax, then 141 rupees 60 paisa. He will pay you 141 rupees 60 paisa. Okay, Yes, sir. but you pay to the government only 3 rupees 60 paisa. Because, that 18. because Yeah. 18 is in your credit, already in credit last month. Okay, sir. Okay, sir. So this is the total GST, ITC and GST. So this is the benefit you have paid to the government only on your value addition, that is 20 rupees, 3 rupees 60 paisa. And rest 18 is paid by your supplier. से आपने स्क्रैप, ब्रास स्क्रैप या एल्युमिनियम स्क्रैप खरीदी, उसने 18 रुपया गवर्नमेंट को दे दिया, 3 रुपए 60 पैसे आपने दे दिया, वहां पहुंच गया आपको केवल 3 रुपए 60, जबकि आपके सप्लायर ने आपको दिया कितना, 21 रुपया 60 पैसा, 21 रुपीज 60 पैसे आपके बायर ने आपको 120 दिया प्लस 21 रुपया 60 पैसा दिया। तो जो 18 रुपया आपने दिया था वो आपका रिइंबर्स हो गया, और गवर्नमेंट को आपने जो एक्स्ट्रा उससे लिया आपने वो गवर्नमेंट को दिया। सर, आई एम एबल टू कन्विंस यू? Yeah, thank you, sir. Could you please tell the trading also, sir? The same issue. ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, ट्रेडिंग में तो आपको 100 रुपीज में जो वैल्यू एडिशन होगा आपका वो बहुत केवल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होगा आपका। भाई देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में ओवरऑड्स भी होते हैं, प्रॉफिट भी होता है। ट्रेडिंग में तो आप ए लाएंगे, ए बेच देंगे, यू रिसीव द ए एंड सोल्ड द ए, तो आपको उसमें केवल आपका जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है उस पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट। आप 100 रुपए का गुड्स लाए, you procured the 100 rupees good and you sell it to 102 rupees, 100 rupees का 18 rupees आपको ITC आपके अकाउंट में है और 102 का आपको देना है, तो आपको 2 रुपये 36 पैसा गवर्नमेंट को देना है, बाकी तो गवर्नमेंट के पास पहले ही पहुंच गया। Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Okay, obliged.
थैंक यू, थैंक यू। राजकुमार सर, एक फेसबुक के हमारे ऑडियंस है मिस्टर युवराज करके, जी जी, का एक सवाल है हमारे आज के सब्जेक्ट को कनेक्टेड, वो सवाल नहीं है, कोई नहीं सर, कोई नहीं। इट्स रिलेटेड टू द जीएसटी। वेरी राइट। उनका एक सवाल ऐसा है कि एक सेक्शन 8 कंपनी है, ओके, इनकम टैक्स के पास उनका एटीजी 12A का रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, अभी वो डोनेशन लेना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। कोई नहीं तो जब डोनेशन वो लेंगे तो जी। डोनेशन के टाइम पे वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। तो वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं सर, नहीं। एक्चुअली जो जीएसटी की जो यहाँ सप्लाई नहीं हुआ ना सर, हाँ, डोनेशन एंड गिफ्ट अगर आप कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई जो भी कंसिडरेशन इज वन साइड। डोनेशन, आई एम द डोनर एंड Yes. यू आर, एंड डोनी को मैंने दिया, तो इसमें डोनेशन पर कहीं कोई इशू नहीं है सर। ओके, ओके। और बट हाँ, if it is a donation in kind, डोनेशन इन, ओके, donation in cash, no issue, donation in kind, तो वो आपको जो भी डोनर जो भी चीज देंगे वो जीएसटी रेट देंगे। बराबर है। अगर वो मनी आप फॉर्म तो में नॉन देता है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटी है नहीं, यू बराबर आर है। ओनली द कंज्यूमर ऑफ दैट डोनेशन, देयर विल बी नो जीएसटी, नो जीएसटी। और वो सेक्शन 8 कंपनी जो है, जी वो सेक्शन 8 कंपनी जब वो फंड यूटिलाइज करता है जी सोशल एक्टिविटीज के लिए, जी उस टाइम पे जीएसटी का रोल कैसे होता है? सर, उसमें तो फिर एक्चुअली देयर आर सर्टेन एग्जम्पशंस as per notification number 12 by 2017 and 2 by 2017, there are certain exemption कि 12A में अगर कोई रजिस्टर्ड है कंपनी, तो उसको कोई CSR एक्टिविटी करने के लिए, तो वो स्पेसिफिक है हर चीज में, मतलब उनको जीएसटी का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर वो उस एग्जम्पशन में फॉल करते होंगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्या क्या वापस से सर बताइए, हाँ, कौन से केस में मिलेगा, कौन से केस में नहीं मिलेगा? हाँ, तो वो सर्टेन एग्जम्पशंस आर देयर। हाँ, मैं आपको रेफर कर दूं, आपको एक्चुअली उसके लिए मुझे फैक्ट्स बताने पड़ेंगे कि वो क्या एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एजुकेशन पर्पस के लिए कोई इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टूडेंट्स है, हाँ, उनके लिए अगर कोई एजुकेशन ऑफर करता है वो सेक्शन 8 कंपनी, या हाँ, कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? नहीं, वो तो कुछ चार्ज नहीं करेंगे ना उसमें, स्टूडेंट स्टूडेंट्स को है। चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाँ, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को पिक्चर में लेके आते हैं, ओके, हम्म, उनको उनको उसका जो फी है वो मैं समझ ऑर्गेनाइजेशन गया, मतलब आपने आउटसोर्सिंग की अपनी जो हाँ, एक्टिविटी है उसको आउटसोर्सिंग की, एंड जब जो आउटसोर्स कंपनी है दैट इज ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, परफेक्टली राइट, देन ही विल चार्ज जीएसटी ऑन देयर सर्विसेज। हाँ, क्या, तो आपका कहना है कि क्या वो मुझसे चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस यस यस, वो देखना पड़ेगा। 12 by 2017 में there are certain services are exempt to the non-profit making organization under registered under section 12A। वो देखना पड़ेगा वो क्या सर्विसेज है। तो आई विल सेंड यू द नोटिफिकेशन, और वी विल टेक इट आफ्टर दिस ओके ओके, ग्रेट सर, ग्रेट, सेपरेटली, वी विल डिस्कस दिस। ग्रेट। इसके अलावा कोई टैक्सेशन पिक्चर में आता है क्या ये सेक्शन 8 कंपनी के लिए? सर, जैसे कि डोनेशन लिया और कुछ एक्टिविटी किया, वो एक्टिविटी केस में जीएसटी के अलावा कोई टैक्सेशन आएगा क्या? वो आई एम शॉर्ट ऑफ दैट नॉलेज एग्जैक्टली। मैं एक्चुअली कॉर्पोरेट्स में भी नहीं देखता और इनकम टैक्स भी नहीं देखता। ओके, ग्रेट, तो जीएस आई सोनली इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, तो मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट, सो आई कैन नॉट ओपिन ऑन दैट। ओके। और ये सीएसआर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और क्या होता है? नहीं सर, ये मेरा सवाल है। नहीं सर, वो सीएसआर के बारे में एक्चुअली सीएसआर तो मुझे मालूम है, कॉर्पोरेट्स को करना पड़ रहा है, तो मेरे पास क्वेरीज आती है सीएसआर एक्टिविटीज में। हम टॉयलेट बनवा रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, बट ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर है इज चार्जिंग जीएसटी, और उस सीएसआर एक्टिविटी पर देयर इज ए सो मेनी लिटिगेशन
कि डिपार्टमेंट कहता है कि दिस इज CSR एक्टिविटी पर जो आपने GST पे किया उसकी ITC नहीं मिलेगी आपको, हाँ, क्योंकि CSR एक्टिविटी इज नॉट ए बिजनेस एक्टिविटी। बराबर है। और हम लोग नहीं सर, हम लोग कहते हैं कि दिस इज द कंपल्शन टू ए कॉर्पोरेट, तो उसको 2% CSR एक्टिविटी के, तो दिस इज ए बिजनेस एक्टिविटी। अगर मैं कॉर्पोरेट नहीं हूं तो थोड़ी करूंगा CSR एक्टिविटी, फिर तो मोदी जी कर ही रहे। भाई मैं शौचालय बनवा रहा हूँ, दिस इज माई कंपल्शन, 2% of my profit is to be expend in the CSR activity. हाँ, So this is a business expenditure. Litigation is there, but advance authority in GST has pronounced so many judgment against the industry. CSR पर कोई ITC नहीं मिलेगी CSR। ओके, आप तो नॉन प्रॉफिट है, मैं बता रहा हूँ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी CSR एक्टिविटी करनी पड़ती है उनको, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, तो हाँ, उनको ITC नहीं मिल रही, तो उनके लिए तो बर्डन हो जाता है वो। ओके, ग्रेट। हमारे ऑडियंस है पार्थिपन जी, उन्होंने हैंड रेज किया है। प्लीज Okay. पार्थिपन जी अनम्यूट करके सवाल पूछिए। प्लीज। Hi, sir. या Hi, sir. One of my client mistakenly availed IGST input into CGST and SGST. या So my question is, what shall we do, sir? And I need a solution for this issue. you have taken ITC of IGST, CGST and SGST. Then Yes, right. What IGST is the input query? wrongly availed to. Sir, yeah, what is the query? sir, IGST input wrongly availed in CGST and SGST. Oh, मतलब it is only compensating error, मतलब आपको IG का लेना था और and your to be reflected CGSG, but you have taken in IGST. Yes, sir, right. तो you that किस period कौन सा है इसका? Year. Sir, 2019-20. 2019-20. 1920. तो now ITC आप तो ले नहीं सकते, but there is a circular, क्योंकि इसमें आपका ना रेवेन्यू का कोई लीकेज नहीं है, ना रेवेन्यू का कोई एविजन है, इट इज जस्ट कंपनसेटिंग हो गया अपना। तो Sir, can you speak? आपने रिटर्न 9 भरा होगा 1920 का GSTR 999C। Yes, sir, already filed in, sir. फाइल, तो उसमें आपने उसको एरर को ठीक नहीं किया। Sir, Hello? You got any notice from the department? Yes, sir, yes, sir. Okay. तो आपने वो 9 और 9C में उसको रेक्टिफाई नहीं किया उस एरर को। Sir, not rectified. Okay. Actually, that's why you got the notice. Otherwise, there is a provision to rectify all these type of mistakes, which is not a leakage or this is a short payment or excess availment of ITC. Yes. You can rectify in your. Then you put the authorities that there is a revenue neutral exercise. Yes, sir, revenue neutral. This is revenue neutral. Yeah. So you put your, you will get the benefit. Okay, sir. If any judgment is there, I will give to the Mr. Navnath. Okay, sir. Yes. Okay, sir. I will give. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Any other question? Yes, there is a couple of questions in chat box. So Yeah. I will read it Please. out. The first question is from, let me see the name. If a gold jewelry buying The calendar. question- Yeah, that is the second question. And the first question is from Varadaraju. Yeah. And the question is, ours is a service company. Yeah. Recently purchased capital goods such as air conditioners, microwave, etc. Yeah. My question is whether our organization can avail input credit while making the GST payment, and also the rules relating to availing input tax. You can avail, but please tell me what is your services? What type of service you are providing? In IT and IT, yes. IT industry. So you have a office place. Office place is there, yes. Yeah. So you have installed air condition and microwave in your office. Yes. So 100% you can take
as per section 16. Okay. Any input, any capital goods, any service for the business, for the purpose of business and furtherance of business. Okay. So it is allowed, 100% allowed in a straight way. उसमें कोई आपको वो भी नहीं करना, पार्ट है पूरा ITC लीजिए and you utilize for n number of months जब तक आप उसे यूज कर सकते हैं. Okay. Thank you. क्योंकि AC और माइक्रो पे ITC ज्यादा हो सकता है, 1 महीने में ना खत्म हो आपका. हाँ, 1 महीने हो जाएगा. हाँ हो जाएगा तो कोई नहीं. हम भी अपने ऑफिस में AC और जो माइक्रोवेव आपने लिया होगा फॉर योर स्टाफ कुकिंग. Yes, yes. हाँ, Yeah. but it is okay. It is okay. You can take. Okay. Any Thank you, other? sir. And the second question is from Sri Kumar Pillai. Yeah. The question is, if a gold jewelry buying calendar, gifts, etc., shall we get ITC on that? In fact, it is connected with furtherance of business, No. or just treated this as gift and restricted ITC. Sir, actually, you are right. This is sales promotion activity. Sir Pillai, it is a sales promotion activity, but it is restricted under section 17(5). Any gift cannot be, ITC will not be available on any gift and free samples. So you cannot take this ITC on that. Very great input, sir. Okay, and then Mr. Devendra have raised their hand. I request you to unmute and please ask your question, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Yeah. Can you hear me? Yeah. Pak. Okay. अभी जो क्वेश्चन था ज्वेलरी पे जो गिफ्ट जी, देते हैं, जी. तो जस्ट लाइक सेम अगर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज और वेंडर्स को गिफ्ट कॉइन सिल्वर कॉइन गिफ्ट करती है दिवाली पे, तो उसका ITC भी नहीं क्लेम कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं. आप केवल सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं 1 साल में 50,000 रुपए का, बस एक एम्प्लॉय को नहीं, टोटल 50,000. सर्विस इंडस्ट्री को नहीं, मतलब हमारा सर्विस इंडस्ट्री तो नहीं एप्लीकेबल? नहीं सर्विस, हाँ तो सर्विस इंडस्ट्री में तो आप क्या दे सकते हैं, उसका कुछ नहीं दे सकते. उसका ITC क्लेम नहीं कर सकते? नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल. ओके सर. फर्दर आपने बताया कि कैपिटल गुड्स का ITC हम क्लेम कर सकते हैं. हाँ. अगर हमारा 100% एक्सपोर्ट है, हाँ, तो इन डेट केस में अगर विथ पेमेंट ऑफ ITC में जाता हूँ, हाँ, तो वो उसके सामने हम कैपिटल गुड्स का ITC सेटअप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, आपको और रिफंड अगर विदाउट पेमेंट में जाता हूँ, तो उसका रिफंड नहीं क्लेम कर सकते? नहीं सर, देखिए आप ITC उसको आप ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा कस्टम से डायरेक्ट. करेक्ट. लेकिन अगर आप LUT में जाएंगे तो आपको कैपिटल गुड्स और सर्विसेज का नहीं मिलता. ये उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है. तो सर अभी बेसिकली क्या है, हमारा ITC काफी सारा एक्यूमुलेटर हो चुका है, तो आप ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स करिए ना सर. वही बेटर रहेगा. वो बेस्ट ऑप्शन है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है. जी. तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है. ऑल द पेपर्स आर परफेक्ट. ओके, करेक्ट. I always advise my clients to go from tax payment channel, because वहाँ इंटरवेंशन नहीं है. ओके. Whatever in your credit ledger, I have debited to the department and the custom has refunded me in my bank account within a month. And it's our choice. Now we can raise the invoice. It is my choice, and you can opt both. Without LUT, without payment. You can go for both options. If you have not available credit in ITC ledger, you go for LUT, and if it is available in your credit, you pay tax and take refund. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Another question from Suryakant Thape. Whether there will be any output liability on distribution of gold coins to employees value more than 50K? Output liability नहीं है when it is not for business ना. या आप सिक्योर कैसे किया आपने, मतलब आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं ना. हेलो, हाँ सूर्यकांत जी. He's saying yes. Please repeat your query. I think Suryakant sir, can you unmute and just elaborate on your question, please?
You are manufacturing say, gold coins? Suryakanji, please unmute yourself and ask your queries, please. अतुल जी देखिए क्या चैट बॉक्स में डाला क्या उन्होंने? Yes, yes. Yeah. Whether They have there put will query in chat box, but it is not clear whether he is manufacturing or distributing. Want distribution of gold coin to employee value more than 50K. No. Actually वो confuse हो गए उस मेरे 50,000 वाले issues हैं. Self manufactured goods that I am manufacturing shirts. Then I can distribute up to 50,000 in a year to my employees, free shirts. For on that, I am not required to reverse the ITC. I think. और सेम सिनेरियो अगर कोई ट्रेडर है तो उसके लिए क्या होगा सर? ट्रेडर तो नहीं हो सकता ना सर. ट्रेडर तो एक्चुअली क्योंकि वो तो जो चीज परचेज कर रहा है उस पर ITC ले रहा है, उसको सेल कर, वो तो फिर सारा ही शिफ्ट कर देगा. वो तो सारा ही गिफ्ट कर देगा. वो तो फिर टैक्स देगा ही नहीं, वो तो सारा IT. तो उसको एप्लीकेबल नहीं है वो. नहीं. यस देवेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, उन्होंने पूछा है सवाल. So ये 50K वाला सर आपका ही है? Hey, last question was from Devendra, which they themselves have asked, and request another participants if they have any question, please raise their hand and ask. We have 5 minutes more. Yeah, I think if there are no questions, then we can go ahead for concluding this session. All to Mohite sir. Thank you very much, राज जी. बहुत बढ़िया. आपने जो भी चंद बातें हमें बताई, विशेष करके एक लॉ के हिसाब से और जो भी जजमेंट है हाई कोर्ट्स के, इसके हिसाब से, और सारी बातें अपने बहुत सिंपल तरीके से, बहुत लूसिड लैंग्वेज में हम तक पहुंचाई है सर. एंड वी आर वेरी हैप्पी द वे यू बेसिकली ट्रीटिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, and altogether you are making everyone here to be more attentive and to receive what basically you intended to convey, especially through this GST with especially receipt and altogether the concerned thought process you put together. Sir, we are very happy, and such type of sessions require more to enlighten to our all entrepreneurs, all business people, because there is a need of upgrading and meeting all together with us sensitizing ourselves in taxation. Because as you rightly pointed out, you rightly crafted the thing is that the knowledge of the taxation is absence with functioning authority as well as absence with the law authority, and there is a vacuum which created in a larger scale absence of excellence for making the things with a proper concerned taxation area. And with this, sir, we conclude here that yes, making absence with the sense is the law which you basically putting in front of us by various concern assumption and proper concern, the solution and the resolutions, and putting the thought process here to make a sensible learning process here, sir. We're very happy that you made us to be more and more, awake with what our job, what is our role, what is our responsibility as a taxpayer. And altogether, everyone here certainly have the thought that as my duty, what I have to perform towards this particular GST. And yes, number of basically excuses where now people are trying to find out to save the taxations. But yes, we are basically absent of learning
what is actually to be act on that, and you have put very nicely, sir. I'm very happy, sir. I'm from non-financial background, but yes, I also educated by your, absolutely, I got a lot of enlightenment, sir. Thank you very much for being with us. FIIP is always taking care of, the people who are connected with us and who are not also connected, because this is an NGO where we are contributing for the Atmanirbhar Bharat, sir. And you are there, one of who basically put our 9th session very handsome way, very beautiful way. And yes, there is a knowledge base in that line. So with this, sir, thank you very much for contributing in that line. Navnathji. Yes, thank you. Thank you very much. Navnathji, my one request, because as